by 2 or 2 by 3. Okay, so please correct that one. So -3/2 that will be हाँ मैं 2 by 3 लिख दिया था. हाँ yes sir. पहले भी एक बार किया था इसको हमने. Okay. So today we're going to discuss this Pn junction. Okay, so what is a Pn junction? Okay, in Pn junction we bring a P type of semiconductor in contact with a N type of semiconductor. Okay, so in order to understand what happens when we bring two semiconductor in contact, okay, first we see what happens when we bring two metal together. Okay, so for example, I have a metal A. Okay, this is my metal A. Now in metal, I know that my Fermi level lies in the conduction band. Okay, so say this is my metal and this is Fermi level. And in the case of metal, Fermi level is okay very close or overlap with the inside this conduction band. So if I want to remove electron from metal, okay, suppose this is my vacuum level. This is my vacuum level. Okay, then I need to supply energy. Okay, that energy is called the your work function. Okay, so you write phi or you write q phi 1. Okay, so this is the work function. You need the energy equivalent to work function you need to supply. Okay, now suppose I have a metal 2. Okay, so this is my metal 2. Okay, metal A or metal B. Now suppose the Fermi level of this metal, okay, is below the Fermi level of metal 1. So suppose this Fermi level is here. Okay, now this and this energy is q phi 2. Now what will happen when I bring these metal in contact? Okay, so when I bring this metals in contact, what will happen? There will be transfer of electron from the metal whose work function is less. Okay, because Fermi level is up. Okay, so electron will transfer from here to here. Okay, so in one material, when we bring in one material, there can be only one Fermi level. Okay, so for example, I gave you semiconductor. This is EC. This is EV. Okay, suppose this is my N-type material. So I told you this is a Fermi level. Now this Fermi level should be constant throughout the distance. Okay, in whole semiconductor, this Fermi level should be constant. If Fermi level is not constant, in that case, what will happen? There will be transition of electron. Okay, there will be always current be flowing. Okay, so for in equilibrium, okay, there should be always your Fermi level should be constant. Okay, so when we are bringing two metals also together at the contact, there should be only one Fermi level. That means these Fermi level will align. So when I bring in contact, what will happen? So when I bring these in contact, okay, so what will happen? Now electron will transfer because this is the, you can slightly make up. Okay, so this will be easily understand. Okay, so this is your Fermi level. Okay, now what will happen? Electron will transfer from here to here. Okay, so when electron will transfer, then what will happen? This will become positive charge. Okay, the interface which is transferring the electron, okay, at the contact, okay, because this is transferring electron, so here will we have a positive charges, and here where electrons are getting accumulated at the metal B contact, there will be slightly negative charges. So there will be a potential difference will be developed. Okay, that is called phi 2 minus phi 1. Okay, so difference of energy, difference of this, the difference of this energy level equivalent q phi 2. This will be energy. Okay, and if I take potential, so this phi 2 minus potential will be developed across this metal, and there will be now electric field will be the Fermi level will be now constant. Okay, so what I'm trying to say, whenever you bring two material in contact, okay, so at the contact there should be only one Fermi level. That means there will be
alignment of Fermi level. Okay, then only this contact will be in equilibrium condition. Otherwise, there will be always current flowing. Okay, so this is the condition for the metal. Okay, now what we'll see when we align to semiconductors. Okay, Yes, sir. now one more thing, in the case of metal, we have Fermi level. Okay, this is vacuum and this is the Fermi level. Q say metal. Okay, this is metal. In the case of semiconductor, what happens? Sir, sir, last statement, can you please repeat कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ मैं. condition one. In the case of semiconductor, what we have conduction band. Okay, we have valence band. Okay, and in between somewhere we have a Fermi level. Okay, so in metal, your electrons reside near the Fermi level. Okay, so you need to supply the energy equal to work function. Okay, while in the case of semiconductor, this is my semiconductor. Okay, this is metal. Now in the case of semiconductor, my electrons are in conduction band. Okay, so I have to supply this energy, and this energy is called electron affinity. Okay, this is energy is called electron affinity, and this is the Fermi. This is the work function. Okay, of semiconductor. So this diagram you need to remember when we will discuss MOSFET. Okay, that time we will require these things. Okay, so now what is the question? So I'm telling, whenever you bring two different material, dissimilar material का मतलब है कि जिनके Fermi level different है. Whenever you bring in the contact, okay, so at the contact there will be alignment of Fermi level, because one material should have only one Fermi level. So when you bring two material in contact, okay, there will be transfer of charge so that they can align. Wherever we make junction, okay, then the junction there will be transfer of charges. Okay, so that Fermi level can align. Is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. सर वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करने के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं? नहीं, फर्मी लेवल को अलाइन करने के लिए. फर्मी लेवल भी जब आप किसी मटेरियल को, करंट कैसे फ्लो होता है, अगर आप किसी कंडक्टर में भी आप जो बैटरी लगा देते हो तो वो बैटरी में करंट कैसे फ्लो होता है, क्योंकि वो बैंड को बैंड कर देता है. ओके, या फिर फर्मी लेवल में डिफरेंस क्रिएट कर देता है. ओके, कॉन्टेक्ट में ये होता है. अदरवाइज बिना एनर्जी डिफरेंस के फ्लो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, जैसे दिस इज माय सेमीकंडक्टर, say only we have n-type semiconductor. Now I am supplying, say, suppose energy. So because of this energy, what will happen? There will be tilt in the band gap. Okay, जहां पर इलेक्ट्रॉन है, जहां पर नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, वहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी राइज हो जाएगी, और जहां पर पॉजिटिव है वहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हो जाएगी. तो ये मेरा EC है, तो कांटेक्ट पे EC है, यहाँ पर EC है, ये शिफ्ट आ गया. शिफ्ट कितना आ गया? QV0, जितना मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, QV0. ओके, सो ये मेरा ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन. whenever I supply battery voltage, okay, so what will happen? So this is my conduction band. Okay, suppose this is my conduction band, EC, and this is my valence band. Okay, so whenever you supply battery, okay, this electron who's a conduction band, their energy will rise, they'll get kinetic energy. This is the potential energy. Potential energy, EC को जो भी energy है, that is kinetic energy. Okay, now because of this, now this electron is kinetic energy, now it will start moving. Okay, and while moving, it will scattered. Okay, and while scattered, this energy will come down. Energy will come down. Okay, again come to the bottom of the conduction band. Okay, for example, you have a mass. Okay, it is in height. Okay, so at height it has only potential energy. जैसे जैसे नीचे गिरेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगी. ओके, और जब वो स्ट्राइक करेगा फ्लोर पे, देन व्हाट विल हैपन? Is whole potential energy will be zero. Now whole energy will be converted to kinetic energy. So similarly, it happens. Okay, whenever you supply energy
okay, to the semiconductor, okay, the band get tilt. Now यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है जब वो कंडक्शन बैंड से ऊपर जाता है, ओके, जबकि होल की एनर्जी इंक्रीज होती है जबकि वो नीचे जाता है. Okay, so there is a difference between electrostatic potential and electronic potential. Okay, तो यहाँ पे भी देख लो, मैंने जब पहले ग्राफ प्लॉट किया था मेटल्स का, ओके, तो मैंने कुछ ऐसा प्लॉट किया था, ओके, और यहाँ पे मैंने बोला माइनस है, यहाँ मैंने बोला प्लस है, जबकि हम क्या मानते हैं, प्लस तो ऊपर होता है और माइनस नीचे होता है. तो दीज आर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स. ओके, so electron levels में electronic potential is always opposite to the electrostatic potential. तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये अप है, ये अप है. ओके, so this is the one thing. So इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन ऊपर जाने से बढ़ती है, जबकि होल्स की एनर्जी बॉटम जाने से बढ़ती है. ओके, दूसरी थिंग, जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐसा स्लोप मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट नीड एनर्जी, इट कैन गो थ्रू द बैंड डायग्राम. ओके, क्योंकि वो स्लोप में जा रहा है, क्योंकि नीचे जाने से उसकी एनर्जी कम हो रही है, ऊपर ज्यादा एनर्जी है. जबकि होल्स में अपोजिट है. इन एनी एनर्जी डायग्राम होल्स कैन इजिली क्लाइम, क्योंकि ऊपर एनर्जी कम है. ओके, उसको अगर नीचे आना है, इट कैन नॉट कम डाउन, होल कैन नॉट कम डाउन बिकॉज नीचे एनर्जी ज्यादा है. Okay, so these things you have to remember. We will discuss further when we discuss these band diagrams. Okay, so now इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मतलब जो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितना electron एनर्जी जा affinity रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए. Okay, वो इलेक्ट्रॉन that energy is called electron affinity. This is the work function, this is the electron affinity. ओके सर. Okay, we'll discuss this thing again and again. सर ये Q53 क्या है? हाँ, Q xi लिखा है मैंने, xi. Okay, xi electron affinity. Okay, नहीं सर, ये जो आप Q53 लिखे हैं ना कंडक्शन बैंड की, कंडक्शन बैंड में क्या Q5 Q53 Q5s S as the this is the work function of semiconductor. जैसे यहाँ मेटल का वर्क फंक्शन है, जी. वैसे ये सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन. So what happens, we bring a p type material in contact with to n type of material. Okay, so p type material क्या होता है? So this is my p type material. Okay, so in p type material we have donor ions, donor atoms. Okay, and we have holes. Okay, and energy band diagram of p type material, this p type. Okay, if I draw energy band diagram, I have EC, दिख रहा नहीं है EC? Yes, sir. and then we have EV. okay, और यहाँ पर मेरा इंट्रिंसिक लेवल है. ओके, सो इंट्रिंसिक लेवल ऑफ पी टाइप मटेरियल. ओके, और यहाँ पे मेरा फर्मी लेवल है क्लोज टू द E Fermi level of p type. Okay, and similarly if I want to represent a n type of material, okay, we have donor atoms, and we have electrons. Okay, electrons, these are holes. Okay, these are acceptor atom, ion or atom. Okay, or this is donor. Okay, donor ion or donor atoms. Okay, now if I draw the energy band diagram of this one is EC. Okay, EV, this is intrinsic level of n type of material, and close to the conduction band we have this Fermi level of n type of material. Okay, now what will happen,
when I bring two material in contact, okay, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं. Okay, so when I bring these material in contact, what will happen? There will be diffusion of charges. That's what I discussed, diffusion current. Okay, so when I bring this in contact, okay, there will be diffusion of electron from n type to p type. Okay, and when you does, and same thing, there is a difference in Fermi level. Okay, this Fermi, when we bring together, this Fermi level should align. So electron will go from here, it will combine with the whole. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे. तो जब भी इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम होता है तो फर्मी लेवल नीचे आता है, और जब भी होल्स का कंसेंट्रेशन कम होता है तो फर्मी लेवल ऊपर आता है. यहाँ पर फर्मी लेवल ऊपर आएगा या फर्मी लेवल नीचे आएगा. ओके, सो व्हेन वी ब्रिंग दिस मटेरियल इन कांटेक्ट. सर ये जो अभी आपने बताया ना, वो हाँ. प्लीज जरा रिपीट करो. फर्मी लेवल किसका ऊपर नीचे? हाँ बता रहा हूँ. दिस इज माय p region. Okay, this is my n region. So you know concentration of electron is given by Ni, okay, Nc exponential EC minus EF EC minus EF by KT. Okay, minus EC by KT. तो जब भी n कम होगा, okay, n कम होगा तो आपका EF नीचे आएगा कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड से नीचे आएगा n टाइप का. ओके, जब भी n बढ़ेगा तो फर्मी लेवल ऊपर जाएगा. n टाइप p टाइप में डिफरेंस होता है. p टाइप में जब होल बढ़ते जाएंगे तो फर्मी लेवल नीचे आता जाएगा, जैसे होल कम होते जाएंगे तो फर्मी लेवल ऊपर आता जाएगा. इंट्रिंसिक की तरफ जाएगा. इंट्रिंसिक में दोनों बराबर होते हैं. इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल मिडिल में होता है. व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्मी लेवल गो अप इन द केस ऑफ n टाइप. इन द केस ऑफ p टाइप फर्मी लेवल गो डाउन. तो जब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे फर्मी लेवल ऊपर जाएगा. अभी क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो उसका फर्मी लेवल नीचे आएगा. इसमें होल्स कम हो रहे हैं क्योंकि जाके इलेक्ट्रॉन जाके होल्स को रिकम्बाइन कर रहा है, डिफ्यूजन. ओके, तो क्या हो रहा है कि आपका ये जो फर्मी लेवल ऊपर आ रहा है. ओके, तो दे आर ट्राइंग टू अलाइन टुगेदर. ओके, सो व्हाट विल हैपन व्हेन दीस सर एट द. एक स्मॉल डाउट था सर, हाँ, बहुत पूछो. स्मॉल डाउट है सर. ये p टाइप n टाइप, जैसे n टाइप में यू हैव जस्ट टोल्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज. हाँ, सर पर जो डायग्राम आपने बनाया है इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम दिख रहे हैं. कहाँ दिख रहे हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन, इसमें एन टाइप में खाली इलेक्ट्रॉन है. ये होल थोड़ी है, ये तो डोनर एटम, ये तो डोनर एटम है. डोनर एटम है, डोनर एटम में. ओके सर. Okay, now what will happen when these electron leave this donor atom? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा प्लस चार्जेस हो जाएंगे. ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस चार्जेस हो जाएंगे. माइनस, थोड़ा गैप कम करना, माइनस. ओके, so these are called so these are the ions. Okay, so यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, ये अनकंपनसेटेड आयंस. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. नाउ होल्स आर डिफ्यूजिंग इन दिस साइड. ओके, होल आर मूविंग हियर, दिस इज होल डिफ्यूजन. Okay, and this side we have electron diffusion. Now this diffusion cannot continue. अगर डिफ्यूजन होता ही रहा तो क्या हो गया, चार्जेस बढ़ते जाएंगे. अगर डिफ्यूजन होता रहा तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ते जाएंगे, यहाँ माइनस चार्ज बढ़ते जाएंगे. जैसे मैंने बताया थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर किसी सेमीकंडक्टर को आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे. अब अगर आप एक सैंपल को लेकर रूम टेम्परेचर, एक टेम्परेचर में रख दो तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ता जाना चाहिए ना भी. अगर आपने किसी एक सैंपल लिया एंड यू कीप इन सम टेम्परेचर and because of this energy, what will happen, conduction electron from valence band will go to conduction band, so they'll keep on moving. और तो फिर तो सैंपल का कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा अपने आप ही. ओके, बट इट डजंट हैपन. ओके, इसीलिए मैंने बोला था कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, कैरियर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है. इसका मतलब जितना जनरेशन होता है उतना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज मूव करेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. ओके, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड they will push back. Okay, they will stop diffusion of these charges. Okay, and so what will happen when this electric field, that will provide drift current. Okay, so this side we'll have a whole drift current. Okay,
Similarly, in this side we have electron drift current. आप इसको इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट बोलते हो या फिर जो चार्ज करंट, it will stop and somewhere it will stop. There will be equilibrium and then they will stop. Okay, in that equilibrium what will happen, your total whole current, which is called total due to diffusion plus due to drift, that will become zero. Similarly, your electron current due to diffusion and due to drift, they will cancel this component. Okay, and now what will happen, this is my p region, this is my n region. Now when I bring this contact, okay, इसका फर्मी लेवल नीचे आएगा, इसका फर्मी लेवल ऊपर जाएगा. So finally now at Pn junction, what is the हाँ एक मिनट, let me draw. So this is my EC. Okay, this is my EV. Okay, here my EC. Okay, here is my EV, and this is my, now at contact there will be only one Fermi level. Okay, so this Fermi level will be close to the conduction band of n-type material and also close to the valence band of p-type of material. This is an equilibrium. This is the Fermi level, final Fermi level. Okay, here EF1 equal to EFP हो जाएगा. हाँ, आप क्या बोल रहे हो? What is the question? सर मैं बोल रहा हूँ कि ये ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा. ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन डिफ्यूजन. ओके, सो ना यहाँ पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है ये, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट इसी डायरेक्शन में होगा. होल को हमको रोकना है, होल को ये प्लस, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, डिफ्यूज करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ पर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. हाँ. ओके, this is my electric field direction here in the here. Okay, so now this is the my final डायग्राम में EC आएगा ना, राइट साइड को EC आएगा ना. EC है ना, ये नहीं, ये EC है, ये p टाइप का EC है, ये n टाइप का EC है. ओके, क्योंकि जब हम बैंड विल बी जॉइन टुगेदर, ओके, इनका वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता है. ओके, बैंड गैप थोड़ी चेंज होगा. बैंड गैप अगर दोनों का बैंड गैप सेम है तो बैंड गैप सेम ही रहेगा दोनों का. थोड़ा प्लॉट अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है. तो फर्मी लेवल डाउन हुआ है तो देयर विल बी बेंडिंग, देयर विल बी बैंड एट द इंटरफेस, जहां पे जॉइंट हो रहा है वहां पे ये बैंड हो जाएगा. ओके, एंड देयर विल बी पोटेंशियल विल बी डेवलप, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू VB, द एनर्जी विल बी QVBI. दिस पोटेंशियल विल डेवलप व्हेन वी ब्रिंग to one p type and n type in the contact. So this is the energy band diagram, okay, of PN junction, okay, with no bias. अभी तक हमने इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इस पे कोई पोटेंशियल लगाया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं, बाहर से पोटेंशियल लगाया. तो विथ नो बायस, दिस इज माय कंडीशन ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम. ओके, सो अभी ये यहाँ तक क्लियर है. सो फर्मी लेवल विल बी अलाइन, and because there are alignment of Fermi level, your energy diagram, there will be tilt. Okay, that will be bending of energy. This one. Now अभी देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी के चल के रेस, बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्लाइम. मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन कैन फॉल बट दे कैन नॉट क्लाइम. तो अभी डिफ्यूजन नहीं हो सकता जब तक इस बैरियर को हटाएंगे नहीं. इस बैरियर पोटेंशियल, जब तक इस बैरियर पोटेंशियल हटाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो हियर. सिमिलरली होल कैन नॉट फॉल. ओके, तो होल के पास तो ये फॉल है, तभी वो नहीं आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉल करने बढ़ती है. सो नाउ देयर विल स्टॉप बिकॉज ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल. देयर विल बी नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस. ओके, यस ध्रुवी, यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर ये जो EF होगा ना वो अलग होगा ना, मतलब पीक टाइम में जो EF होगा और एन टाइप में नहीं, वो जो भी ये जो बैंड डायग्राम है खाली कांटेक्ट का है. जहां पे कांटेक्ट हुआ पूरा मटेरियल का चेंज नहीं होता है. पूरे मटेरियल पे तो वही कहानी है. दिस बैंड डायग्राम, दिस बैंड एन टाइप और पी टाइप का बैंड डायग्राम चेंज नहीं हो रहा है.
खाली कांटेक्ट पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट पे ये बैंड डायग्राम है एट द कांटेक्ट ओनली। ओके कांटेक्ट का नहीं पूछ रही हूँ सर। हाँ। ईएफ की जो वैल्यू होगी सपोज एन टाइप के लिए जो है और पी टाइप के, तो कंबाइन करके जो ईएफ की नहीं, वैल्यू यहाँ पे तो नया फर्मी लेवल बन गया ना, इसको उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? ओके ये तो ये जो बैंड डायग्राम है ये तो मैंने बताया है कि दोनों दोनों एक इक्वल हो गए, वैल्यू नहीं चेंज नहीं हो रही है। ओके यू जस्ट राइट ईएफ, यू वांट योर चेंज नहीं हो रही है मतलब बी दिस व्हेन यू अलाइन। ओके हर मटेरियल का अपना एक फर्मी लेवल होता है, ये बैंड डायग्राम का ये जो कांटेक्ट है इस एरिया का फर्मी लेवल ये है। ओके नाउ मतलब सर डिप्लीशन लेयर का वो एनर्जी बैंड डायग्राम है। डिप्लेशन रीजन का पीएन जंक्शन का, यस डिप्लेशन रीजन का एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये समझ लो Okay, पीएन जंक्शन का बोलो। ठीक है नाउ आई नो इन पी टाइप ऑफ मटेरियल, ओके पी टाइप ऑफ मटेरियल से माय concentration of holes are majority charge carriers, that is equal to Na. Okay similarly if I want electron in p type of material, okay that is a minority charge carriers in equilibrium, I am writing this in equilibrium, इसकी वैल्यू कितना होगा? This is p type. Okay सर ND here this is my n type. So in p type majority charge carriers are holes, the concentration equal to Na, तो concentration इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ND सर nd कैसे होगा? Ni square by Na. Na square by Na. Okay mass, okay this is mass action law. So similarly if I take n type, here majority charge carriers are electron and material is n type, so I am writing n and n, and this is in equilibrium, so I am writing O, this is equal to nd. Okay similarly if I want to holes in n type, that is n 0, that will be ni square upon nd. Okay now p type में फर्मी लेवल कितना होता है? फर्मी लेवल ऑफ p type कितना होता है? अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, The EC plus this is my EC, EV, this is p type, here we have E intrinsic of p type, and this is the E Fermi level of p type. Okay and here we have EC, okay this is EV, this is E intrinsic of n type, and this is the Fermi level of n type. Okay so EFP की वैल्यू कितना होता है? the EFI minus EIP minus KT ln. ln Na upon Ni, Yes sir. ये होता है ना। एक्सटेंसिंग केस में फर्मी लेवल कैसे लिखते हैं? ओके फर्मी लेवल नीचे होता है इंट्रिंसिक से, तो EIP माइनस KT ln Na upon Ni, ये फॉर्मूला तो कराया था, क्वेश्चन भी कराए थे इस पे। ठीक है सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट नाउ EFN, वो कितना होगा? The EIP plus KT ln ND upon Na. EIN plus KT KT ln ln ND upon Ni. Ni. Okay now I want QVBI, so QVBI will be equal to what? Difference of Fermi level EFN minus EFP. okay निकालो कितना आएगा? ये एंट्रेंस तो सेम ही है दोनों ही, ये एंट्रेंस का सेम सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप पी टाइप है, तो एंट्रेंस का सेम। ओके सो यू कैन राइट EIP इक्वल टू EIN इक्वल टू EI. ओके intrinsic level. Now if we say QVBI, okay, so EFN minus, so this will upon Ni square. so KT ln KT ln ND upon Ni plus
Okay, so I'm writing here again. So Q VBI KT ln ND upon NI plus KT ln NA upon NI. Okay, so VBI will be now KT upon Q. EIP equal to EI है ना? हाँ, तो इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है ना दोनों का. ओके ओके. Okay, so this VBI become KTQ upon ln Na upon NI square. ये आपका बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला है. ओके, इसको याद रखना है क्योंकि यही इसी को हम डायोड में यूज करेंगे. सो दिस द जो डायोड में जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है. ओके, किसी डायोड को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज उसको बोलते हैं हम कट ऑफ वोल्टेज देते हैं डायोड, वो सेम यही होता है. वो पीएन जंक्शन नहीं है, दैट इज बैरियर पोटेंशियल KTQ by ln Na upon ND NI square. Okay, now can you modify this formula with these concentrations? Okay, so I can write now. सर Okay, ये QVBI क्या है सर? ये तो एनर्जी है ना. VBI तो पोटेंशियल है. ओके सर. पोटेंशियल Q से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ये बैरियर पोटेंशियल है, इसको अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगा. वो जो डायग्राम किया है वो तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से ना. ओके सर, तो ये मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस का एनर्जी है ये. हाँ, क्योंकि ये जितना शिफ्ट होता है, ओके, उतना ही तो बेंडिंग होता है. जितना फर्मी लेवल्स में मेटल होता है, जितना फर्मी लेवल्स का डिफरेंस होगा, फर्मी लेवल्स का डिफरेंस होगा या जितना वर्क फंक्शंस का डिफरेंस होगा, एक ही चीज है, उतना ही बेंडिंग होगा, उतना ही पोटेंशियल डेवलप होगा. ओके सर. Okay, now suppose I want to write this VBI equal to KT upon Q ln N, okay, and NPO. Okay, KT upon Q ln PPO PNO. ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर. लिख सकते हैं ना. भी इसको रिप्लेस कर दो वहां से. आपका जो Na है, जैसे ये वाला केस है. ओके, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो ये ND है आपका जो फॉर्मूला है VBI KT by Q ln Na upon ND upon NI square. ओके, तो NI square by Na NPO और ND क्या है आपका? ND आपका NNO. Okay, so I'm writing again here KT by Q. Okay, so ln ND upon NI square Na. Okay, so KT by Q, your ND is नीचे चला जाएगा, लिखेगा नहीं. So ND is NNO and Ni by Ni square by Na is NPO. So we can write. So this is the majority concentration of majority charge carriers. This is the concentration of minority charge carriers. This is the concentration of majority charge carriers holes. This is the concentration of minority charge carriers. So majority or minority के charge carriers की concentration पता है. Okay. Then also we can calculate this barrier potential. So barrier potential. So what is this N, N0 and PP, PPO? These are majority charge carrier concentration. Majority charge carrier concentration. Okay, and this is NPO and P के अंदर N के अंदर P minority है, P के अंदर N minority है. Okay, so minority is a minority charge carrier concentration. Okay, so this is formula. Now यहाँ पे एक फॉर्मूले में this is my VBI is equal to KT ln Na ND upon Ni square. अब Ni is the intrinsic carrier concentration. ये किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे. टेम्परेचर पे. और सर टेम्परेचर सेम है तब किस पे डिपेंड करती है? सर मास पे, इफेक्टिव मास पे. फॉर्मूला देखो उसका क्या, फॉर्मूले में क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है?
huh? So 2 pi m kt by This is under root NC NV yes, sir. exponential minus EG upon 2 KT होता है. Yes, sir. किस पे डिपेंड करता है? बैंड गैप पे. Band gap पे. ओके, तो जिस मटेरियल का बैंड गैप ज्यादा होगा उसमें Ni कम होगा कि ज्यादा होगा? सर कम होगा कम सर. होगा. कम होगा. ओके, तो जिसका बैंड गैप ज्यादा होगा उसका Ni कम हो जाएगा. Yes, sir. ओके, पर उसका VBI बढ़ जाएगा. जिसका बैंड गैप ज्यादा है उसका VBI ज्यादा है. सिंपली बात है, क्योंकि जिसका VBI ज्यादा है जिसका EG ज्यादा है उसका Ni कम है. ठीक है, तो अगर मुझे बैंड गैप के टर्म्स में लिखना है इसको, so if I write band gap, okay, suppose silicon, germanium, okay, germanium का जो EG है that is equal to 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो जो जर्मेनियम का जो VBI है, जर्मेनियम का जो VBI है that is वो ज्यादा कम होगा. वो कम होगा किससे? सिलिकॉन से. सिलिकॉन VBI, क्योंकि सिलिकॉन का जो VBI है, सिलिकॉन का EG जो है that is equal to 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सिमिलरली आप टेक गैलियम आर्सेनाइड. ओके, उसका VBI सबसे ज्यादा होगा गैलियम आर्सेनाइड का, क्योंकि इसका बैंड गैप सबसे ज्यादा है. EG इज 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो जैसे जैसे बैंड गैप बढ़ता है, ओके, इफ EG इज मोर देन Ni इज लेस. ओके, EG ज्यादा है, ओके, मोर देन Ni इज लेस, और VBI इज मोर. क्योंकि Ni कम होगा तो VBI बढ़ जाएगा. तो ये भी ध्यान रखना है कि बैंड गैप पे कैसा, तभी सिलिकॉन का जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है डायोड का वो 0.7 के आसपास होता है, जबकि आपका जर्मेनियम का जो होता है वो 0.3 होता है. ओके, when we will use diodes then we'll see this one. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. Okay, so this was your barrel potential. Okay, now I also want to know my electric field inside this PN junction. Okay, so now what this PN junction we are studying now, that at the moment, okay, that is called abrupt PN junction. Abrupt PN junction. Okay, why I am calling abrupt PN junction? अब्रप्ट पीएन जंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ चार्जेस क्या है, चार्जेस सडनली चेंज हो रही है. चार्ज की जो डेंसिटी की प्रोफाइल है वो सडनली चेंज हो रही है. एक तरफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और सडनली एकदम से पॉजिटिव हो जा रहा है. तो अगर आप चार्ज प्रोफाइल को देखें पीएन जंक्शन में, दिस इज माय पीएन जंक्शन. ओके, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ माइनस चार्जेस है, माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस है. Okay, suddenly there is a change of density, okay, from negative to positive. That's why these type of junctions are called abrupt PN junction. Okay, so इसको देख लेते हैं एक बार. So this is my P. Okay, so this is my here, and this is my P region, this is my N region. So this is my XP, say 0, and this is my XN. Okay, so this is my W equal to XP plus XN is the width of this region. Okay, so this is my minus here, minus, and here we have plus. अभी मैंने जो P टाइप के पास में जो माइनस है उसको छोटा बनाया है. ओके, और इसको बड़ा बनाया है मैंने, पर्पसफुली बनाया है. ओके, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, तो सबसे पहले तो क्या है कि whenever you have these two regions, okay, तो इन रीजन्स में चार्ज हमेशा सेम होगा. चार्ज सेम क्यों होगा? क्योंकि ये चार्ज हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल रीजन है, ये न्यूट्रल रीजन है. जब उनको कॉन्टेक्ट में ला रहे थे तभी वो न्यूट्रल था, तो एक्स्ट्रा चार्जेस कहां से लाएंगे? ओके, सो दिस रीजन एज अ होल इज न्यूट्रल. दैट मींस द चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस बोथ आर इक्वल. और इफ यू वांट टू से इन अदर लैंग्वेज, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्लस से लेकर माइनस, प्लस से शुरू होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम प्लस एंड गोस माइनस. हर प्लस के लिए माइनस होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, सो द चार्जेस, ओके, एट एन टाइप एंड पी टाइप दे आर सेम. Okay, so if I want to write charges, okay, so in P type, what is the charges? Okay, the depletion layer width is XP. Okay, if the cross section is A, and so I can write
the charges, suppose here charges are Na acceptor ions, here Nd dopants. So charge will be Q Na, okay, area into area, these are concentration into length xp, okay, then Q Nd A xn. ये एक्सप्रेशन क्लियर है? बी Na is the concentration of my acceptor ions, okay. Each concentration ko, each Na will give one electron. So if you multiply by Q, this become charge concentration. Charge concentration को volume से multiply कर दिया, this become my charge, okay. These are charges per centimeter cube, okay. Charge per centimeter cube into centimeter cube, charge per meter cube into meter cube, okay. XP जो डिस्टेंस है सर वो XP डिस्टेंस है भी, ये मेरा सेमीकंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और लेंथ है, ओके। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है प्लस इसकी लेंथ है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा A into XP, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? A into XN, एंड चार्जेस यहाँ पे कितना है? ND. तो दिस इज चार्जेस आर बैलेंस, ओके. नाउ आई कैन कैंसिल दिस Q, ओके, A कट जाएगा, तो नाउ माय Na XP is equal to ND XN. Okay, now if I want my XP by XN, that will be ND, और उल्टा मुझे XN by XP करना है, XN by XP चाहिए, okay, that will be Na upon ND, okay. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं Na का कंसंट्रेशन ND से ज्यादा है, अगर P is heavily doped, ओके, सो ये जो जंक्शन है दैट इज P plus N जंक्शन. P plus N जंक्शन का मतलब क्या है? डोपिंग इन P लेवल इज हायर देन डोपिंग इन N लेवल. दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ Na इज ग्रेटर देन ND. तो जब Na बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? XN बढ़ जाएगा. उल्टा है, रिवर्स है. अगर यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे डोपेंट एक्सेप्टर का, इंप्योरिटी का, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके जो पास में जो डिप्लेशन विड्थ है, रीजन है, वो पतला हो जाएगा, और एन टाइप के पास में है वो बड़ा हो जाएगा. सिमिलरली इफ यू इंक्रीज द इफ इज द डोपिंग ऑफ एन इज ग्रेटर देन P, देन दिस विल श्रिंक, और वो उधर वाला extend हो जाएगा, okay. So that is a reverse thing, okay. So sometime, so we generally use P plus N type of this junction, okay. P plus plus भी हो सकता है. अगर P plus plus करते हैं, अगर P का जो concentration है बहुत ज्यादा हाई है N से, in that case what will happen? In that case यहाँ ये तो खत्म हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये बढ़ जाएगा. That is called one sided abrupt Pn junction, okay. उसका भी एप्लीकेशन है, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है. हाँ सर, यहाँ पे XN और XP को कांस्टेंट रख रहे हैं सर हम. ये लेंथ है, हम इसको मान रहे हैं, सेंटर को 0 मान रहे हैं, और ये मेरा XN है, ये माइनस, ये 0 की तरह, तो इसको माइनस XP बोल रहे हैं. ये विड्थ है, टोटल डिप्लेशन लेयर का विड्थ है, XP प्लस XN. ओके. ठीक है. नाउ तो सर ये W है वो कांस्टेंट रहेगा ना सर? हाँ, वो तो विड्थ तो कांस्टेंट ही है, ओके. सर, विड्थ वो 0 बायस पे कांस्टेंट है, बाद में देखेंगे पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करती है. ये लोग जब चेंज करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज बोले थे ना, स्टेटमेंट बोले थे वो उसी के आधार पे बोले थे ना सर. भी अभी तो कांस्टेंट है, नो बायस में तो कांस्टेंट है, बट अगर इसको मैं वोल्टेज लगा के चेंज कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, अगर विड्थ को चेंज कर दूंगा. ठीक है. ठीक सर. So now this is my charges, okay. Now I want to plot electric field, okay. So this is, first of all, this is my graph, okay. Here I have plus charges, okay, and here I have minus charges, okay. So this is my charge density curve, okay. So here I have a dopant QND charges are there, and here I have a QNA charges are there, okay. So this is my, say this is rho versus X. This direction is X, okay. So now I have given charge profile is given, okay. Here charge is QND, here charge is QNA, okay, or rho is equal to QNA. If I per centimeter cube I calculate, okay. Charge density, if I make charge density, then it is QND, okay, and here is a QNA minus, okay. So now this charge density is given to me, okay. Now if I want to plot electric field, this is XP, this is XN, okay. So now if I want to plot electric field, this is my XP and this is my XN. So electric field कैसे कैलकुलेट करेंगे?
हाउ टू प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इसको आई विल ड्रॉ इट वन. अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा ढंग से नहीं बना. ओके, सो आई एम प्लॉटिंग इट अगेन. ओके, सो दिस इज माय ओके चार्ज प्रोफाइल q rho q and d. Okay, and here we have q and a. Okay, and this is here xp. Okay, and this is my minus xp, and this is my xn. Now I want electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? Sir, 1 by equals to minus dv by dx. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. The gradient of potential. यहाँ पे हमको चार्ज डेंसिटी दे रखा है. सो व्हेनेवर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सर. सिग्मा कहाँ दे रखा है? यहाँ पे इसमें रो दे रखा है. यहाँ पे रो देखा है. हाँ, तो जब भी Del चार्ज dot equals डेंसिटी. to rho by epsilon naught. Poisson's equation. So we have a Poisson equation. Very good. Whenever we are given the charge density, if we want to calculate electric field, we need Poisson equations. Okay. तो ये इंटरव्यू में कभी-कभी तुमको बुला के बोर्ड पे दे देंगे, ये चार्ज का प्रोफाइल है, कुछ भी बना के दे देंगे, इंटीग्रेशन या वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे कि प्लॉट करो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट करो, प्लॉट करो. ओके, सो व्हेनेवर देयर इज चार्ज इन सम रीजन, इन डिप्लेशन रीजन वी हैव चार्जेस. So whenever there are charges, okay, we apply Poisson equations. Okay, so Poisson equation in one dimension. So Poisson equation is what? d phi dx2 equal to minus rho upon e, as where es is the permittivity of the medium. Okay, and I know my electric field E is minus d phi upon dx, which is potential. So I can write this equation as d upon dx equal to rho upon epsilon s, where epsilon s is the permittivity of semiconductor. Okay, now I want to draw electric field. Okay, so what will do? I will integrate. So here charge density is q na. Suppose in p region, now I want to calculate for p region what is electric field. Okay, so in p region, what is electric field? Say put adding p region. So p region start from minus xp to 0. Okay, so here my de upon dx will be rho upon epsilon s, that is minus q na upon epsilon s. Okay, because in p side we have a minus q na. Okay, this is the p side, this is the positive is towards n side, and this is the minus at your n type. So this will be q na es. So I want electric field, so I will integrate this dA. Okay, q na es into dx. So if you integrate this one, this will give me electric field in p side minus q na es x plus constant. Okay, constant. Now I know at x is equal to at x is equal to minus xp, my electric field is 0. यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना, इस रीजन तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मूव करता रहता है. तो at x equal to minus xp, my electric field is 0. So if I put this value here, 0 minus q na minus xp, so this become xp es, this will be c. So my c will be minus q na xp upon es. Okay, so that means now I can write my electric field in p region. So p region, my electric field value is, okay, this will come minus. Okay, so minus. Okay, so minus q na es x plus xp. Okay, this is in when my x lies between 0. ये आ रहा सबका? Yes sir. Okay, now वो x minus xp हो जाएगा ना? नहीं भी यहाँ माइनस में ये, ठीक है, और ये सी भी माइनस में आ रहा है. अच्छा माइनस में तो माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, प्लस हो गया. ठीक है. Yes sir. नाउ एट x इज इक्वल टू xp, x इक्वल टू माइनस xp, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? x सर 0 हो जाएगा. Zero. minus xp पे. 0 हो जाएगा. ओके, एट x इज इक्वल टू माइनस xp, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू g पे कुछ वैल्यू आएगा. दैट मींस माइनस यहाँ पर अगर मैं इस xp पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, फिर माइनस साइन है,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। और यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 पे, x at x इक्वल टू 0 योर E इज इक्वल टू E max and that is equal to minus Q Na ES XP. ओके, सो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है EM. ओके, सो दिस इज द प्रोफाइल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, लाइन की इक्वेशन तो है, स्लोप डाउन y इक्वल टू माइनस mx प्लस c. So this is the equation. Okay, so this is the electric field for this Pn junction at P side. Okay, ये clear है? Yes, sir. Okay, now calculate for n side. n side में same चीजें, direct we have to calculate the same way, and n region is n region. Okay, so n region starts from 0 to xn. Okay, and so I can write सर हाँ सर इन P रीजन वाला x इक्वल्स टू माइनस XP पे E 0 हो जा रहा है। हाँ तो माइनस सर एक्सपी पे हाँ। यस सर, तो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड, कैन यू प्लीज रिपीट इट? आफ्टर दैट आई वांट एट x इक्वल टू 0, ओके x सर, 0 पे कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ ओके सर, यहाँ 0 या नेगेटिव वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके ओके 0 पे ये आ रहा है, XP पे 0 हो रहा हाँ है। ठीक है। नाउ d अपॉन dx. ओके, नाउ वी हैव अ q and d चार्ज डेंसिटी. ओके, चार्ज डेंसिटी इज q and d अपॉन एप्सिलॉन s. इसको भी इंटीग्रेट कर दो, सो इफ यू इंटीग्रेट दिस वन, दिस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड q and d es x plus some constant, say c2. Okay, now at x is equal to xn, again electric field 0. Okay, ये boundary condition है. In order to calculate the expression for I am applying boundary condition. Okay, Poisson equation में हमेशा यही तो करते हो. Okay, you know some region is there. In that region you know the charge densities and you know the boundary condition. You apply boundary condition and charge density and then you calculate the electric field. Okay, now if I take xn, okay, at x is equal to xn, my E is 0, so this will give me C2 equal to minus Q ND xn ES. Okay, so now if I want to calculate the electric field in n region, so this is P region. Okay, now n region, so n region it will give me E equal to Q ND epsilon ES x minus xn, x minus xn. Okay, is the expression for electric field in n region. Okay, ये आपको याद रखना है, this is P region, this is n region. Now again you see at x equal to xn becomes 0. Okay, and x is equal to 0, again this becomes maximum. Okay, so this is a graph. So this is the electric field profile in a Pn junction. Okay, so this is electric field profile in a Pn junction. Now at x equal to 0, these both values should match. Okay, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, यहाँ पर क्या आएगा, सेम, दे शुड मैच. So E is equal to 0. This is my Q Na XP ES. Okay, and here I'm getting minus Q ND ES XN. Okay, so these should match. So if you इनको match करेंगे तो minus cancel, Q cancel, okay, ES cancel. So Na equal to XP, ND equal to XN. ये सेम कंडीशन है जो हमने वहां पे निकाली थी, चार्ज के लिए निकाली थी. ओके, Na इक्वल टू XP, ND इक्वल टू XN. सो Na इक्वल टू XP, ND इक्वल टू XN, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं. ओके, सो दिस इज okay, so that says the charge is also same. Okay, this condition also says charge is also same. तो ये हमारा हो गया, ये हो गया. ठीक है, now I want to calculate x इक्वल्स टू 0 पे आपने इन दोनों को इक्वेट किया ना? x इक्वल 0 पे दोनों को इक्वेट किया. ओके, तो अभी टाइम बचा है क्या? ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर. ओके, टुमारो विल कंटिन्यू अगेन. ओके, विल डू सम प्रॉब्लम्स. और अभी एक क्वेश्चन कर लो या तो फिर अभी. ठीक है, नाउ we have calculated electric field. Okay, tomorrow we'll see how to calculate the depletion width formula
in terms of potential VBI. So I'm giving one question. Okay. So for silicon, the carrier concentration is given 1.5 into 10 raised to power 10 per centimeter cube. Okay. Similarly, Ni for germanium is given as, germanium में Ni ज्यादा होगा कम होगा? बैंड गैप ज्यादा, बैंड गैप कम होता है, ज्यादा सर, ज्यादा होगा. ओके. तो 2.4 10 raised to power 13 per centimeter cube, and Ni for gallium arsenide is given 1.79 into 10 raised to power 6 per centimeter cube. Okay. So he asking calculate the built potential, calculate VBI for all these semiconductors. Okay. And the carrier concentration doping is same. So Na value is given 10 raised to power 18, okay, per centimeter cube, and Nd is given you 10 raised to power 15 centimeter cube. So the doping levels are same in all these three semiconductors. Okay, Na and Nd values they are given. Okay. at Now room temperature. So you have to calculate the built-in potential. If you make Pn junction out of this one, okay, you have to calculate the built-in potential for Pn junction if you make Pn junction out of these semiconductors. Okay. So you have to calculate VBI for silicon, VBI for germanium, and VBI for gallium arsenide. Okay. This is your homework. Okay. You calculate and send me. So I am stopping here. Sir, at Tomorrow, room temperature. हाँ. सर ये एब्रप्ट पीएन जंक्शन क्यों कहते हैं सर, एक बार अपडेट फिर से मतलब एक्सप्लेन. अब्रस मतलब जो चार्ज डेंसिटी प्रोफाइल है वो Yes, सडनली चेंज हो रही है. एक जगह पे तो प्लस हो रही है, स्टेप है ना. अपडेट का मतलब स्टेप है. सो व्हेनेवर sir. देयर इज अ स्टेप, ओके, स्टेप मींस अब्रप्ट. So this is the charge profile. It's are step like profiles. Okay, charge profiles are step. Okay, these are charge profiles. These are the charge profiles here. वो जो डिप्लीशन लेयर So में. हाँ, so यहाँ पे क्या बन रहा है. n type है, so plus. Here minus. Okay, here QND. Okay, here QNA. The suddenly change in the charge profile, or charge profiles are like at the junction. As you move across the junction, charge profiles change in like a step. They are in a step. Okay, that's why it is called abrupt PN junction. अगर लीनियर नहीं होता तो आपका चार्ज डेंसिटी लीनियरली बढ़ता. ओके, या कोई और भी प्रोफाइल हो सकता है. So we'll solve our case. We'll see this step also. We'll see linear also, and if possible, I will take a random profile and I will try to calculate these values what we have done for this. Okay, we'll try to calculate those also. Okay. So ये homework है आपका. Okay, you have to send me. So I'm stopping here. Okay, any Sir. question? हाँ. Sir, if both junction are heavily doped, then क्या होगा sir? बहुत और heavily देखो, सबसे पहले तो एक होता है नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर. ओके, नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वो जो हम कर रहे हैं वो नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर है. इसमें इंप्योरिटी एक लेवल बहुत हाई लेवल नहीं है. अगर इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो उसको बोलते हैं डीजेनरेट सेमीकंडक्टर. ओके, और डीजेनरेट सेमीकंडक्टर एक तरह से मेटल की तरह बिहेव करता है. तो अगर डिप्लेशन विड्थ दोनों का पतला हो गया, तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया, मेटल में जो पोटेंशियल होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल होता है, जब दो मेटल कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो बहुत स्मॉल होता है क्योंकि उसमें चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है मेटल के अंदर. तो वो जो पोटेंशियल होता है वो बहुत कम, डिफरेंस तो कम होता है. सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी. ओके,
रिप्लेशन विथ कम हो जाएगा, वो मेटल कॉन्टैक्ट की तरह हो जाएगा इफ दे आर हाईली डीजेनरेट्स. ओके, that I suppose. Okay. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आज रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्या? शायद हो रहा है सर.